initiative against narcotics, war in the state. He has initiated a lot of changes in our functioning, which we will be bringing to you as we go along today. I welcome once again each one of you, and I'm very grateful to all of you that I know the court timings were discussed and 4 o'clock seemed to be suitable to everybody, but each of us has our hands full. Even so, you took time out to be with us. You're very, very welcome. And a very warm welcome to Shri Chirag Bhanu Singh and Mr. Arvind Malhotra, Shri Mohinder Chauhanji, Mr. Sood, and Secretary Law once again. And a warm welcome to each one of you. Let's go along the consultations now. And let's look at the film, a very short film about what the children had to say, so that you get an insight as to what our first round of consultations was, and then we give you an insight as to what the police is doing. Thank you. The film, please. इस पत्ती ने मेरे को मजा दिला दिया, उस इंजेक्शन से क्या पटाखा होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। एक ऐसा टाइम था जब हम अपनी नेबरिंग स्टेट को पंजाब को कहते थे कि पंजाब इज अ हब फॉर ऑल द ड्रग अब्यूज, कि मोस्ट ऑफ द ड्रग इज कमिंग फ्रॉम हिमाचल. So now it becomes a ladder: cigarette, alcohol, cannabis, heroin. Wow! It is the duty of every parent to check their youth if what they are doing, and no one is talking about the mental health. Basically, in most of the cases, addiction is a disorder of head. It's not only a disorder of lack of motivation or lack of willingness. These sedatives are more readily available than alcohol, क्योंकि ड्रग पेडलर उससे उसकी आईडी नहीं मांग रहा. आप हिमाचल से हो, आपने तो ट्राई किया ही होगा. या फिर पेडलर्स जो होते हैं, आप किसी को तो जानते होंगे ही आप. ये तो एक assumption है that we need to change. This is the perception of Himachal Pradesh right now. Calling it a Devbhoomi, we don't want it to be the next Urta Punjab. We do not want it to be the next Urta Himachal. Because web series, for example, we have censor boards for films, but we do not have censor boards for web series. जो लिरिक्स है आजकल गानों के, एक मेंटल स्टिग्मा बन जाता है हमारे बच्चों के, उसमें जो स्कूल के बच्चे हैं कि हम कूल लगेंगे. Why not bring someone who has gone through rehab and have an interactive course? Because that guy will tell us the truth. And I'm sure we'll get scared. Like heroin is not a good thing. रीएडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है. जिस दौरान आदमी ड्रग अब्यूज करता है तो मोस्टली क्या होता है, देयर कम कुछ लोगों में पहले से पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ड्रग में जाते हैं, या ड्रग लगातार लेने से पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो ये कंसिडर किया जाता है कि आप परेशान क्यों हो, है ना, रादर दे टेलिंग अस कि वी आर अर्निंग फॉर यू, हम स्ट्रेस्ड हैं, हमें तुम्हें पालना है, हमें सोसाइटी में रहना है. So why can't you people also consider us that we have some point too? Ki we can be stressed and accept having good phones and good everything. We have a lot of stress about other things also. Peer pressure में और भी चीजें होती हैं. Because we lack somewhere on the self-confidence and the high self-esteem, which is really needed in today's youth. But people they specifically don't know like what are the severity of consuming these synthetic drugs. मैंने अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया. सब यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, लेकिन कोई खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा, क्योंकि सबको पता है कि हमारे सर्कल में एक आधा फ्रेंड तो ऐसा होगा जो पर्सनली ये चीज़ें इनटेक कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो ये रिलीजन का है कि महादेव लेते थे. हमें इस मिसकंसेप्शन को खत्म करना चाहिए. Even the children or the youth are afraid that they will get stigmatized if they got rehabilitation. So we have to provide them a personal space with strict guidelines where they can themselves took the help of such kind of medicines through which they can help themselves. The personalized and customized treatment needs to be provided to everybody, right? Because not every case is different, every person is different. थेरेपी होती थी, वो होती थी बाबे या उसके गांव के देवता के पास ले जाओ, उसकी कसम खिला दो उसको. जब तक उसको उस देवता का डर है तब तक तो कसम खा के वो रिहैब हो जाएगा. मेडिवल इंडिया तो बेसिकली जब आप कोई क्राइम करते थे, आप किसी का मर्डर या आप चोरी करते थे, तो पर्टिकुलर लोगों को मंदिरों में भेजा जाता था फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन. और जो चीज थी इनर रियलाइजेशन, जो एक सेल्फ रियलाइजेशन है, वो उनके अंदर आती थी. एंड सम ऑफ देम
दे आर लाइक वो लाइफ टाइम तक मंक बन जाते थे. Why is drinking and smoking normalized in normal households in front of children? जैसे सब drugs की बात कर रहे हैं, but ये छोटी-छोटी चीजें when your parents, your grandparents are smoking in front of children and smoking in front of like and drinking and doing abuse because of being drunk. This is not normal. Like children did not sign up for second-hand smoke. और सेकंड उनकी एक तो रिकमेंडेशंस बहुत आती हैं, जब प्रेशर पॉलिटिशियंस का पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर पड़ता है ना, तो हमें तो लगता है कि ये काम नहीं कर रही है. लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरे सामने जब ये चीज़ हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि पुलिस ऑफिशियल्स गलत नहीं होते, उनके ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो प्रेशर उनको ऊपर से सिफारिश पड़ती है, तो हमें उनको भी समझना चाहिए. आज की टेक्निक पता क्या है? सोशल मीडिया में भी क्या है, हम लोग क्या करते हैं बैठ के, और रील्स, मीम्स, मीम कल्चर इज द की. क्रैक द मीम कल्चर. We have to know the why in order to target how, and I would want to people to know about biopsychosocial spiritual model. Namaskar sir, esteemed guests, respected seniors, colleagues and friends. I am Gaurav, SP Anti-Narcotics Task Force. सर, इस प्रेजेंटेशन में हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिनेरियो को दर्शाया गया है. इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व जो एजेंसीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है. साथ ही NDPS के केसेस जो पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में पंजीकृत हुए हैं उनका एनालिसिस भी किया गया है. इसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस की ड्रग मिनेस के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा रही हैं उनके बारे में भी बताया गया है. और साथ ही फील्ड फंक्शनरीज जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको जो इश्यूज़ लीगल एंड प्रोसीजरल इश्यूज़ फेस होते हैं उनके बारे में भी बताया है सर. इसके साथ ही सर हमने स्टेट गवर्नमेंट्स से अपनी रिक्वायरमेंट्स भी शेयर की हैं सर, वो भी इस प्रेजेंटेशन में दिखाई गई हैं. सर ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर स्लाइड पर दर्शाया गया है. स्टेट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, मैं टॉप से क्लॉकवाइज शुरू करता हूँ सर. डिस्ट्रिक्ट पुलिस ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट में काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है सर. इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होती हैं जो NDPS के केसेस डिटेक्ट करती हैं और फाइनली अक्यूज को अरेस्ट करके चार्जशीट पुट इन करती हैं. सेकंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं सर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर लार्जली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलिसिट कल्टीवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही इसमें इस कल्टीवेशन की इंफॉर्मेशन कंसर्न एजेंसीज़ को देने के लिए भी बाध्य है. सर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक रोल इंफॉर्मेशन देने के अलावा ये भी है कि वो अल्टरनेट जो क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं जिन एरियाज़ में इलिसिट कल्टीवेशन होती है उनको आइडेंटिफाई करें सो दैट कि वहाँ अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाया जा सके. सर नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट. यह डिपार्टमेंट लार्जली डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट पर रिस्पॉन्सिबल है. हेल्थ डिपार्टमेंट की ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की फंक्शनिंग में मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल है सर. इसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सर. सर 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इलिसिट क्रॉप कल्टीवेशन, कैनबिस और ओपियम पॉपी की इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया. इसमें सर डिस्ट्रक्शन ऑफ इलिसिट कल्टीवेशन और इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, ये 2 मेजर टास्क रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिए गए हैं सर. सर स्टेट पुलिस में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना की गई है. यह नारकोटिक्स टास्क फोर्स पिछले साल ही सर बनाया गया है. ये भारत सरकार की एनकॉर्ड मैकेनिज्म के अंतर्गत भी काम करता है. सर ये स्टेट लेवल पर NDPS के बड़े केसेस, उनका एनालिसिस, सीजर, डिटेक्शन और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का काम करता है सर. इसके अलावा सर जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो यूनिट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है सर. इसके बाद सर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें सर वेरियस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सर, जिसमें स्टूडेंट्स को ड्रग्स के ख़िलाफ़ अवेयर किया जाता है, सेंसिटाइज़ किया जाता है और उनके बडी पेयर्स बनाकर
उनको ऐसी मैकेनिज़्म बनाई जाती है जिससे उन्हें एथिकल एट्रीब्यूट्स दिए जा सके सर। इसके साथ ही सर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, इसका भी मेन रोल रिहेबिलिटेशन और ड्रग अवेयरनेस में है। इनका रोल काउंसलिंग, एडिक्ट्स की काउंसलिंग करना, फैमिलीज़, टीचर्स, केयरटेकर्स की काउंसलिंग करना, कम्युनिटी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनमें ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाकर लोगों को एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ सर नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना है। सर स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट इज़ द पेरेंट डिपार्टमेंट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। इनका सर मेन एनकॉर्ड मैकेनिज़्म के कन्वीनर भी हैं सर, और नोटिफिकेशंस और लाइसेंसिंग जो ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस वगैरह होते हैं उनको भी इशू करते हैं सर। और पूरे प्रदेश में सर सभी ड्रग लॉ एजेंसीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। इसके बाद सर भारत सरकार की एनकॉर्ड मैकेनिज़्म है सर, इसको नार्को कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बोलते हैं। यह 4 स्तर पर कार्य करती है सर। इसका जो स्टेट लेवल पर जो चेयरमैनशिप होती है वो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं, और इसमें स्टेट के जितने भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर डेलिब्रेशंस किया जाता है सर। इसी की एक लास्ट मैकेनिज़्म जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है सर, उसमें डीएम और एसपी और अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है सर, और उनको एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सर। सर ये पिछले 6 वर्षों में एनडीपीएस के केसेस अलग अलग ज़िलों में जो पंजीकृत हुए हैं उनका ब्यौरा है। इससे दिखता है सर कि इसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और बिलासपुर ये ज़िले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं सर। इसके अलावा सर बाकी और ज़िलों में भी एनडीपीएस के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। इनसे कोई भी ज़िला सर अछूता नहीं रहा है। सर पिछले 6 वर्षों में जो एनडीपीएस के केसेस रजिस्टर हुए हैं ये उनका एनालिसिस है, और जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनको रेड बार से दिखाया गया है। केसेस जो कोर्ट से डिसाइड हुए हैं उनको ब्लू बार से दिखाया गया है सर, और जो एक्विटल केसेस हैं उनको ग्रीन बार से और कन्विक्शन वाले वायलेट बार से दिखाए गए हैं। तो इन फिगर्स को सर जैसे देखने से पता चल रहा है कि 2020 और 21 जो कोविड का वक्त था जिसमें कम केसेस डिसाइड हुए और कम ही कन्विक्शन हुए, इसके अलावा एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिख रहा है सर कन्विक्शन में। लेकिन जो मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं सर। सर ये अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने में यूज़ किए हैं। इसमें सर डिमांड रिडक्शन, जो कि लार्जली पुलिस का मैंडेट तो नहीं है, क्योंकि सर जैसे पहले देखा कि इसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो पुलिस के कैंपेन्स और ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही किए जा रहे हैं जो पब्लिक और कम्युनिटी को इंक्लूसिव अप्रोच के साथ ड्रग्स की लड़ाई के खिलाफ लड़ने में प्रेरित करती है। इसमें सर डिमांड रिडक्शन में पुलिस ने कई सारे ड्रग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स, स्कूल और कॉलेजेस में जाके सर उनको स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना और बडी पेयर्स फॉर्म करना, ये सब शामिल है। इसमें सर पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समिति भी गठित की गई थी जिनमें लोगों द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती थी, और पंचायत लेवल तक ड्रग ट्रैफिकर्स के ऊपर नज़र भी रखी जाती थी। इसमें कुछ इसके सार्थक परिणाम भी मिले थे सर। इसके बाद सर सप्लाई रिडक्शन है। इसमें सर हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा यह इंश्योर किया गया कि बड़े बड़े केसेस ही रजिस्टर किए जाएं, और क्वालिटी जो सीजर्स की हो सर वो अच्छी हो, और क्वांटिटी भी सीजर्स की अच्छी हो। तो जैसे सर बार चार्ट से देखा था कि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, और एनालिसिस के मुताबिक जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं उनका सीजर भी बढ़ा है सर। इसमें सर इंक्रीजिंगली ज़्यादा से ज़्यादा आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें फॉरेनर्स जो अरेस्टेड हैं उनका भी नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसके बाद सर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने टेक्नोलॉजी के कई सारे एस्पेक्ट्स को ड्रग क्राइम के प्रिवेंशन और डिटेक्शन में यूज़ किया है।
इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया ड्रग फ्री हिमाचल ऐप भी है। इस ऐप में सर 45,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स अभी हो चुके हैं। इसके माध्यम से सर किसी भी व्यक्ति द्वारा गुमनाम तरीके से कोई भी ड्रग ट्रैफिकिंग की कंसाइनमेंट या उसकी शिपमेंट या पेडलिंग की जानकारी दी जा सकती है सर। इस ऐप के माध्यम से कई सारे मुकदमे एनडीपीएस केस के जो है सर पंजीकृत भी किए जा चुके हैं। इसमें सर हमें लगातार प्रतिवर्ष इनपुट्स बहुत सारी आती हैं। उन इनपुट्स में से वो सभी इनपुट्स जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ और एएनटीएफ के फंक्शनरीज हैं उनको शेयर की जाती हैं सर, और उसके बाद उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट्स ली जाती हैं। लार्जली सर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, लेकिन जो इसमें कई सारी ऐसी इनपुट्स होती हैं जिनमें हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर्स भी पकड़े गए हैं सर। इसके बाद सर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। सर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में इस एस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है सर। पिछले 10 वर्षों में सर जो सीज़र या जो अटैचमेंट नहीं हुए थे पिछले 3 वर्षों में हुए हैं सर। इनमें सर मेजर ड्रग ट्रैफिकर्स की प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया है, और इसमें अभी तक 21 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा चुका है सर। सर ये चैप्टर 5A एनडीपीएस के अंतर्गत होती है, और इसमें एक इशू जो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लेवल पर आता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो दिल्ली में है, पहले उनके पास एडिशनल चार्ज होता था सर, अभी फिर उस वजह से इनके पास डिले भी होती थी, तो हमें जो प्रॉपर्टी के जो अटैचमेंट ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी डिले से आते हैं सर। इसके अलावा सर इसमें जो मेजर केसेस थे उनमें से 8 केसेस सर हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी सौंपे हैं सर, जिनमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। अभी कोई उसमें सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव नहीं किया गया है सर। इसके बाद सर रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट, ये एक मैकेनिज्म पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा पिछले 2 वर्षों पहले शुरू की गई है सर। इसका ब्यौरा सर आगे स्लाइड्स में है सर। इस मैकेनिज्म में हम ये इंश्योर करते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स जिनकी डिपोजिशंस पेंडिंग हैं और प्राइवेट विटनेसेस, तो ये 100% जो है सर ये डिपोजिशंस करें कोर्ट्स में सर, और प्राइवेट विटनेसेस भी अपनी डिपोजिशंस 100% करें सर। इसके बाद सर इसमें जो एनडीपीएस की केस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सीज हो जाती हैं, उनका स्पीडी डिस्पोजल भी मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि सर पिल्फरेज रुक सके और किसी भी तरह की जो एडवर्स चीज़ें हो सकती हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, वो बच सकें सर। इनमें सर ड्रग ट्रैफिकर्स जो होते हैं सर उनके ऊपर कांस्टेंट सर्वेलेंस किया जाता है। इसके माध्यम से सर हमें पता चला कि 400 से ज़्यादा हमारे रिपीट ऑफेंडर्स थे एनडीपीएस के, तो उनके ऊपर स्पेशल सर्वेलेंस माउंट किया गया सर। इसलिए और उनके अगेंस्ट में जो बेल के नॉर्म्स हैं उनको भी स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की गई है सर। सर ये स्लाइड डिपोजिशन दर्शाती है। ब्लू में सर ये पुलिस पर्सनल का पिछले 2 सालों में, और रेड में सर ये विटनेसेस का है। पिछले 2 वर्षों में सर ये डिपोजिशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जैसा कि देख सकते हैं सर पिछले 2 वर्षों में 11,500 के करीब पुलिस ऑफिसर्स ने डिपोज किया है, और 2,500 के करीब प्राइवेट विटनेसेस ने भी डिपोज किया है। इससे सर निश्चय ही कोर्ट्स की जो डिस्पोजल है एनडीपीएस केसेस की उसमें बढ़ोतरी हुई है। सर एक ये टोल फ्री नंबर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी चलाया गया है, जिसमें पुलिस को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी और ड्रग एडिक्ट्स को काउंसलिंग देना और उनके फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स वगैरह को काउंसलिंग के बारे में बताना, इसकी जानकारी के लिए भी बनाया गया है। इसके माध्यम से भी सर कई इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और उनके बेसिस पर हमने कार्रवाई भी की है और कई मुकदमे पंजीकृत भी किए हैं। सर अब इस स्लाइड में बेल रिपीट ऑफेंडर्स की जो बेल का एनालिसिस है वो दिया गया है। इसमें सिर्फ वर्ष 2022 के केस ही लिए गए हैं सर। तो जैसा कि देख सकते हैं सर कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट रिपीट ऑफेंडर्स को पूरी बेल जो है ग्रांट की गई है। ये सर एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेस किया गया बड़ा इशू है, जिसके बारे में आगे बताएंगे सर। इसमें सर पुलिस द्वारा बेल आउट अक्यूज्ड भी शामिल हैं और ट्रायल कोर्ट द्वारा बेल आउट अक्यूज्ड भी शामिल हैं।
सर फील्ड फंक्शनरीज जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, इनको सर मुख्यतः ये इशू जो है फील्ड में आते हैं सर। पहला इशू जो बेल है सर रिपीट ऑफेंडर्स का, ये डिस्कस हुआ सर। दूसरा सर, कई बार फील्ड में सर इंडिपेंडेंट विटनेसेस अवेलेबल होने के बावजूद वो एसोसिएट नहीं होना चाहते। इसके अलावा सर सेक्शन 50 में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फेस करते हैं, और अभी रिसेंटली ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने भी इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं सर। यह विदित है सर कि सेक्शन 50 में काफ़ी सारे जजमेंट्स प्रोनाउंस हुए सर, जिनमें कई बार प्रोसीजर्स को चेंज करके फिर रीचेंज किया गया सर। अभी सर इसमें ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने बताया कि पुलिस ऑफिसर जो सर्च पार्टी का हिस्सा नहीं है वो गस्टेड ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उस गस्टेड ऑफिसर के सामने सेक्शन 50 की कंप्लाइंस हो सकती है। पहले सर इस सेक्शन में सर एक बार एक्विटल ऐसे भी हुआ कि डिफेंस ने प्ली ली कि सर अक्यूज्ड को गस्टेड ऑफिसर को सर्च स्पॉट पर सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया गया। लेकिन अभी सर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर बिकॉज लॉ में लैंग्वेज है सर कि द अक्यूज शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट गस्टेड ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट, लेकिन अब उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी इवन इफ द गस्टेड ऑफिसर इज टेकन टू द सीन ऑफ क्राइम, then the search under section 50 is not vitiated. Another issue is sir the commercial quantity of चिट्टा और जो हेरोइन, इसमें सर 5 ग्राम तक जैसे जानते हैं कि हमारी स्मॉल क्वांटिटी है, और 250 ग्राम इज़ द कमर्शियल क्वांटिटी हेरोइन और चिट्टा की सर। इसके बीच में सर 5 ग्राम से 250 ग्राम के बीच में सर ये गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और लार्जली सर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो इस बात को जानते हैं और वो इस प्रोविज़न को एक्सप्लॉइट करते हैं। प्लस सर ये जो कमर्शियल क्वांटिटी है, अगर जैसे चरस की कमर्शियल क्वांटिटी और हेरोइन और चिट्टा की कमर्शियल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाए तो जो इम्पैक्ट सोसाइटी को, जो डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट सोसाइटी को जो जाता है सर, वो हेरोइन की कमर्शियल क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा जाता है सर। और उतनी बड़ी क्वांटिटी को जनरली सर ये पेडल नहीं करते हैं, और छोटी छोटी क्वांटिटी से भी ये उतना डैमेज करने में कामयाब रहते हैं जितना कि ये कमर्शियल क्वांटिटी करने के बाद नहीं कर पाते। तो इसमें सर एक प्रपोज़ल इस तरह का बनाने के लिए दिया जा सकता है कि जो बीच का गैप है 5 ग्राम से 250 ग्राम के बीच का, उसको कम किया जा सके सर। इसमें सर हमने प्रदेश सरकार से प्रपोज किया है कि जो सेक्शन 27 है जो नार्कोटिक ड्रग का कंजम्पशन को पीनलाइज करता है सर, इसको रीफ्रेम किया जाए सर, जिससे जो कंज्यूमर है हम उसकी तरफ एक रिहैबिलिटेशन वाला ओपिनियन रखें, एटीट्यूड रखें सर, बिकॉज ही इज़ अ विक्टिम सर। सो रादर देन पीनलाइजिंग सर इसको रिफ्रेस किया जा सकता है सर। इसके अलावा सर जो प्रदेश में सर पिट एनडीपीएस के अंतर्गत एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाना ज़रूरी है सर, जिससे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं या मेजर ड्रग ट्रैफिकर्स हैं इनके ऊपर नकेल कसी जा सके सर। सर अगर ये 27 सेक्शन का एक पार्ट है जो स्पेसिफिक पार्ट है सेक्शन 64A का सर, जिसमें इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन दी गई है उन एडिक्ट्स को जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वॉलंटरी करते हैं। इस सेक्शन को भी सर रिफ्रेश करने की ज़रूरत है सर, क्योंकि ये जो इसमें ये सेक्शन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो लार्जली सर अक्यूज़ के पास उस टाइम पर होती है जब चार्जेस फ्रेम किए जा रहे होते हैं, तो तब तक अक्यूज़ जो है वो पूरी इस प्रोसेस को सफ़र कर चुका होता है सर। इसके अलावा सर एक स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर रिक्वायर्ड है जिसमें रेवेन्यू, ड्रग्स कंट्रोल, एक्साइज, पुलिस और अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को एंट्री, सर्च एंड सीजर और अरेस्ट की ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए सर। ये ऑथराइजेशन सर अभी जो लॉ के मुताबिक जनरल और स्पेशल ऑर्डर में प्रदेश सरकार ने करनी चाहिए थी, जो कि नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई है सर। इसके अलावा सर दूसरी नोटिफिकेशन या दूसरा ऑर्डर जो है प्रदेश सरकार से ये रिक्वायर्ड है कि जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं इन डिपार्टमेंट्स के और एनी अदर डिपार्टमेंट, उनके भी नोटिफिकेशन की जाए सर, और इसमें साथ ही यह भी बताया जाए कि जो एनी अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी एन्यूमरेट कर सकते हैं सर। इससे सर फील्ड ऑफिसर्स को काफ़ी ज़्यादा
सहूलियत होगी सर। कई जगह पर सर जिसको हम प्रायर इन्फॉर्मेशन जिस गस्टेड ऑफिसर को दे रहे हैं वो उसी गस्टेड ऑफिसर को हम रिपोर्ट भी शेयर करते हैं सर, या उसी गस्टेड ऑफिसर के पास हम सेक्शन 50 की भी कंप्लाइंस करते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि बिकॉज वी हैव गिवन द प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द सेम गस्टेड ऑफिसर, देन वेदर द गस्टेड ऑफिसर विल बी कंसिडर्ड इंटरेस्टेड पार्टी और नॉट। तो इसमें भी सर कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है सर। Sir, these are the requirements from the prosecution department, rather the cooperation from the prosecution department. जो फील्ड फंक्शनरीज को इश्यूज फेस हुए सर, उसमें स्क्रूटनी जो फाइनल रिपोर्ट्स या चार्जशीट्स की होती है सर, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेविएशंस देखे गए सर, वेरिएशन सर। सो इसलिए इसमें हमारी रिक्वेस्ट है सर कि एक यूनिफॉर्म अप्रोच जो है स्क्रूटनी में अपनाई जाए सर। इसके अलावा सर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सर अभी नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के सीजर, स्टोरेज और सैम्पलिंग, डिस्पोजल के रूल्स जारी किए हैं सर। इन रूल्स में सर एक मेन इशू है सर कि जो पहले एनसीबी ट्रिप्लिकेट के फॉर्म भरे जाते थे उसकी जगह एक टेस्ट मेमो इन्होंने बनाया है। इस टेस्ट मेमो में सर उन्होंने रीसीलिंग का कॉलम नहीं रखा है, तो इसके लिए हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से गाइडेंस चाहेंगे कि इसके बारे में भी सुटेबल डायरेक्शंस दे दी जाए। और इसमें सर कई बार अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो हो रही है सर। इसमें सर जो सैम्पलिंग का तरीका है वो अलग अलग ही हो रहा है सर। कई डिस्ट्रिक्ट्स में सर वो सैंपल पूरा का पूरा भेजते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में सैंपल एज पर सैम्पलिंग करते हैं। जैसे सर कुल्लू में अभी सैम्पलिंग होती है सर, वो उसको सैंपल को एफएसएल भेज देते हैं, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होती है सर। और अभी रिसेंटली ये भी देखा गया सर ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा कि 2 केसेस में जो कन्विक्शन हुई सर वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल क्वांटिटी के बेस पर हुई सर। इट वाज नॉट द कन्विक्शन फॉर द फुल कॉन्ट्राबैंड। द कॉन्ट्राबैंड वाज ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी मोर देन 5 kg सर। सो ये भी एक इशू है सर। बस सर मैं यही अपनी प्रेजेंटेशन को विराम देता हूँ सर। इसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स अगर मिलकर काम करेंगे सर तो हम देवभूमि से ड्रग्स की बिजनेस को ख़त्म कर सकते हैं सर। थैंक यू। I now invite the Honorable DGP of Himachal Pradesh, C. Sanjay Kundu, for his address. Thank you. Honorable Shri Chirag Banu Singh ji, Honorable Shri Arvind Malhotra ji, Honorable Principal Secretary Law and his team, Shri Rajeshwar Lal Sood ji, Senior Advocate, Shri Yunus IAS, Commissioner Excise Taxation. They are the holders of NDPS Act and also the Administrative Department as far as drug administration is concerned. Kiran Badana Madam, Director IPR, Shri Mahendra Chauhan ji, Director Prosecution and his team of prosecutors, law officers from the High Court. I can see Senior Advocate General Shri I.S. Mehta ji, his team of law officers, journalists from all over the state, honorable judges, prosecutors, advocates, and my colleague from the police department, ADG CID, Madam Satwant, ADG Law and Order, Shri Abhishek, other police officers. So why we have started this? So I'll go to the background. So when I was a young SP, it was a fun to catch narcotics in the sense that it was a small problem. And if there was a major seizure, we used to say, wow. And generally, it was very simple. It was a straight type of crime. But as we have grown, and especially in the last 10 years, the drug menace has become very, very complicated. It has got interlinked. So what you are consuming here, what our kids are consuming here comes from either Pakistan, through the Pakistan border with Punjab, or through the sea route, through Iran, Pakistan, Afghanistan, and then high seas. So it has become very complicated. And when we were young SPs, terrorism used to be the big thing because Punjab was very disturbed and J&K became very disturbed. Today, we have been able to address that
but drug problem has actually increased many folds. And when terrorism happened, it did not affect Himachal Pradesh. We thought we are Devbhoomi, it will not happen here because we are different kind of people and we are peace loving. But drug abuse and drug trafficking is actually hit the state very hard. This we have to accept. And it is no longer the time that when we were young we could handle it. It has become a multi-stakeholder problem. It has got international linkages. It has got interstate linkages. The profits to be made from a drug like heroin are so much that many people are tempted to get into illicit trafficking. Then the general sense among young people is of depression, dismay. That is why they also go into abuse. Now, what we have been doing, you have been seeing the graphs. So we have been making incremental progress. So our seizures are incrementally increasing. But we realize that things have really got out of hand. Just to give you a sense of what is happening, we have got 8,500 cases of NDPS under trials in various courts in Himachal Pradesh. 8,500 cases. And 7,000 cases are charge sheeted and they are awaiting trials. And if this scale goes on, I think our whole judicial system will be bogged down by just NDPS cases. And in fact, more than 50% of the time of police is just going on in catching drugs, which is not a good situation because there are other things you have to do. Now coming back to drug abuse, in Punjab we call something lost generation. There is actually a lost generation. A generation has been lost. Maybe 2 or 3 generations have been lost because kids have got addicted to drugs and they just don't know what is happening. In Himachal also, the sense that is coming out is we are also in a stage of losing one generation. And this is very serious. And if all the stakeholders, you saw the first slide, so many stakeholders were there. If we don't work in unison, if we don't work in coordination, and if the left hand does not know what the right hand is doing, or left hand does and right hand does not do, I think we will also have a similar situation like Punjab, because we got about 350 kilometer border with Punjab. It is all porous, it is all plain. How many checkpoints can you put? How many nakas can you put? It is a tourist state. People will come here for tourism. How do you check everyone? And if you start doing it, then people will say that the police is harassing us. We have come here for tourism purposes and look what they are doing. One thing I want to caution is, I have got a lot of friends in Punjab and a lot of officers also, a lot of other professionals also. So I asked, what are you doing about your family? They said, we are sending our kids to Canada. I said, why do you want to send your kids to Canada? In the Punjab mein bahut nasha hai. They fear that their kid might get into drugs. So they have an option there. In Himachal, we don't have an option like that. So there's no way we can send our kids to Canada for study. So I find that situation here is much more serious than what it is in Punjab because they have an option. And the government, all elements, whole of government and whole of society approach has to be followed to address this. Now, there's high rate of addiction also. The addiction is increasing. Now, my previous speakers talked about what we should do. So we have this NDPS Act. There are people in the country who say that this is already so strict. It is so draconian. Why do you want to make it more strict? There are already so many people in the jail. Just to give you a sense, in Himachal Pradesh, we have a jail capacity of 2,400. Against that, about 3,000 people are in the jail. So there is actually overcrowding. And more than 1,200 are drug cases. So already 50% of the inmates in Himachal jail are related to drugs. Now, plan A is make the NDPS stricter, which we have done. The state government actually made that law and the Vidhan Sabha has passed it. It has gone to the Center for Assent. That may happen, may not happen. But the criticism will remain. There's another thing.
People say that youngsters who are consuming drugs, they are victims. They should not be treated as accused. Because, say, suppose I am consuming something and I have a police case against me. That means whole of my life is gone. There is no way I can secure government employment. There is no way I can secure a decent private employment also. So, I think wider discussion needs to be done. Now, plan B is that Haryana has recently enacted, or their legislature has passed Haryana Organized Crime Control Act. And I think we need to differentiate. Wherever this crime has become organized and people are deriving benefit from that and people are making property out of that, so that is what we need to attack. And we need to be sensitive towards first-time users. Unfortunately, what is there, this whole architecture that is there, in every district, we need to understand that this is a serious problem. So you need to have a de-addiction center in every district so that if someone gets addicted, you can take him to a de-addiction center. Then finally the legal process, and before he goes back to the society, there has to be some rehabilitation center. So you upgrade his skills so that he can be reintegrated into the society. Otherwise, he'll fall back into the same drug abuse. So that architecture needs to be thought of and well decided. Actually, what is happening is we are thinking in silos. I am thinking as a cop and someone is thinking as a judge, someone is thinking as a prosecutor. But no one is seeing the big elephant. No, there's this elephant of Hindustan. There was a poem. So there are blind people. They are someone who's seeing the leg. He's describing elephant in a different way. Someone who's feeling the tail is describing this problem in a different way. I think we need to see the whole elephant. That is extremely important. And that is why this Pradav has been taken forward by Satwant Madam and our team. Because you need to see the whole elephant, understand the elephant and then probably draw out strategies. See, when I was young SP, we used to go to Kullu. I was in Bilaspur and Mandi. We normally used to go to Manali. And that time, we did not even bother to go to Kasol or Manikaran. I went there once or twice. Last I went there was about 6 years back, when actually a bus carrying Sikh pilgrims fell into Parvati River. Parvati River looks small, but it's got very ferocious. It's got a lot of current. We could not find that bus and also the victims. This time, after this Manikaran incident, I went there. I have seen it has become almost like Manali. And it is all based on drugs. People from everywhere in the country are coming there just to enjoy drugs. It has gained notoriety just for drugs. And I remember when I was a young SP in Kangra, Nurpur used to be a place where kachi sharab banti thi, Channi mein. Now, criminals also know there is not much money to be made out of kachi sharab. So they have graduated into chitta. And one generation is suffering, but their children they have sent to America and Australia and England to study. None of the kids are there. All their kids have basically gone abroad. They've also got the citizenship. The kids are very smart. But it is just because of profits, organized crime nature of this that it has shifted. Una, for instance, Haroli, other places used to be back of beyond. No one used to talk about that. But today it has become a major route of transit. So, thank you very much for coming. And what I just want to conclude is that this of our future generation. And if we lose today, if we don't act today, I think we'll have our whole lifetime to regret. Thank you so much for coming. Thank you so much, sir, for setting the ball rolling. We now have a perspective. We now have an idea which way to go. But before we start the discussions, as the DG said, and some of the youngsters also said, let's see what the drugs do to our to some addicts who are now in rehab centers. Let's see what they have to say and then we start with our discussions. Thank you, Ilma, for the film. हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि, सुनते ही चेहरे पर मुस्कान सी आ जाती है। हिमाचल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से
एक है, जो अपनी सुंदरता, पर्यटन स्थल व आकर्षक स्थानों के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। बर्फ से लदे पहाड़, नदियां व झीलें और प्राचीन मंदिर यहाँ आने वालों को शांति व सुकून प्रदान करते हैं। यूं तो हिमाचल प्रदेश कई बार अनेकों मुश्किलों को झेलने के बाद फिर खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार हालात सामान्य नहीं है। आईजीएमसी शिमला की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का 40% युवा नशे की गिरफ्त में है। नशा हिमाचल के युवा वर्ग को तेजी से अंधकार की ओर ले जा रहा है। अनेकों युवा हर वर्ष नशे के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। युवा नशे से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश में मौजूद नशा निवारण केंद्रों का सहारा ले रहे हैं। एक बार मेरे को ड्रग्स नहीं मिल रहा था, 3-4 दिन से मैं वेट कर रहा था, तलब भी मच रही थी मेरे को। जब नहीं मिलता है ना ये, तो सुसाइड करने को ही मन करता है। वहां तक ही रहता है माइंड कि नशा 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 और कुछ नहीं दिखता। माँ बाप, भाई बहन, नशा करते करते मैंने अपने जो भी बैंक बैलेंस था, घर की जो भी संपत्ति वगैरह थी, सब कुछ मैंने उजाड़ दिया। जो भी चीजें थी बेच दी मैंने। घर से चोरी की घर वालों से, तो फिर मैंने पैसे उठाए, फिर मैं चला गया नशा करने। रिहैब सेंटर में आया तो उसके सर 2 दिन पहले जिसके साथ मैं इंजेक्शन लगा के आया था, उसकी सर डेथ हो गई। पहुंच गए होया ना, उन्होंने हार्ट अटैक हो गया है। तो मैं मतलब बाहर निकल के नहीं देखा भी वो मतलब अपना भी बेड ते बैठे होया या सोफे ते डिगे होया, थल्ले डिगे होया। तो मैं अपने कमरे च वड़ के अपना डोर लॉक कर लिया। तो मैनू ये सीगा भी कदों थल्ले आउण डैडी ते हना भी इन्हां नूं इधर उधर लेके जाण ते मैं अपना नशा करा। हमारे साथ बहुत बार लड़ाई हुई है, हाथों में इतनी हद की खूनों खराबा हुई है। मम्मी के ऊपर हाथ उठा लिया, बहन को उठा के मैंने कितने बार मारा है। नशा निवारण केंद्र एक ऐसी व्यवस्था की कड़ी है जो बनाई गई थी नशा निवारणार्थ, परंतु उसके पीछे की सच्चाई भी कुछ अलग है। न दीन है, न मजहब है, न ईमान है, ये टूटते शरीर बिल्कुल बेजान है। किस में उठाएं उंगली, सबकी मिली भगत से हो रहा यह काम है। कुछ नशा निवारण केंद्रों का खान पान, रहन सहन एक आम व्यक्ति के लिए नरक से कम नहीं है। सहेज लो प्यार से, यह जीवन माँ बाप का दिया हुआ वरदान है। न खरीदो यह जहर रूपी नशा, यह प्रत्यक्ष मौत का प्रमाण है। धुआं धुआं करते करते अब राख होने की बारी है। जाने क्यों न देख पा रहे हो तुम, मौत करीब आ रही है। जाने कितनी लाशों पे खड़ा ये कारोबारी है। नशा त्यागो जल्दी वरना अब तुम्हारी बारी है। यह सोचने का विषय है कि मौजूदा हालात में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? जय हिंद, जय हिमाचल। I would, before we go on to starting the discussions, I would like to thank the SDRF team and our youngster here, Hilma Afroz. She conceptualized and directed this film herself. So thank you very much. The house is now open for discussions. We had a few slides. I did see quite a few people in the room noting down what the problems were. If you so desire, we can put those slides back on. Otherwise, we would start the discussions with the two issues at hand that we addressed in the letters that we sent out to you. What could be done to make the situation better vis-a-vis the law, NDPS Act in Himachal per se? And the second line, of course, a little later, is a time to legalize the production of the crop of cannabis and opium in the state of Himachal Pradesh. So with all my humility, sir, Mr. R.L. Sood, may I start
the discussions and request you to please give your opening remarks. The mic to go to him, please. I think the elder here should speak first. Thank you so much. Ma'am and Mr. Kundu, my dear friend. Parag and Arvind are not only friends, but they are colleagues. Of course, you, sir. You know, it's very often I've noticed the lawyers are at loss for words when they are asked to speak without any fees. But I've overcome that difficulty and I shall address you. I think it's a universal problem. I think we cannot be as serious as we can be regarding this problem. We have a tendency to discuss this problem when we get together, and most of us, when we walk out of this door, talking about it. I have 2 or 3 takes on this. I would tell you that in the 70s and 80s until 90s, I was advising the Israeli embassy, and Malana was mentioned. The biggest influx of foreigners for drug intake is from Israel. And there was one gentleman who was the second secretary to the Israeli mission in India, in the Aurangzeb Road. His name was Michel Harel. I was told last time, about 4 months ago, he was the ambassador of Israel to France. And he discussed it with me. And you know, he said something which I think we should follow. It is an example. He said, we noticed that a lot of Israeli youths, the moment they would finish their conscription in the Israeli army, whether it was 2 years or 4 years, I don't remember, but the first thing they would do is head for Malana. Because the word had spread around that you have been in a disciplined force and you know how the Israeli army is. Now if you want to relax, the only place where you'll get relaxation, at that time they said $5 a day was living a prince's life with all the drugs you can. And that time, mind you, we were only talking about cannabis. We were not talking about devastating drugs like chitta and so on and so forth. So I asked him, Michel, what did you do? With our suggestions, we had a brainstorming session in Delhi. They created a film. What they started doing was, whenever a batch of conscripts would pass out of the Israeli army after doing this stint, they would show that film and show how stringent the laws are in India when you get convicted. He said, we can only teach them. And let me tell you, I was told by the Israeli embassy that there was a 30% drop in applications for visas, equal number of drops, probably percentage wise, in people coming to India for drugs. But that was cannabis. Now we are facing a problem which, and I think it goes to a socio, problem. All of us in India, irrespective of the religions that we belong to, I'll be brief, we did have a very, very firm, strong family system. I personally feel, as a lawyer, my wife was working, but I continue to work even now. But she retired as a doctor from the government service. What is happening is, with both the parents working, that support system is totally lacking. Then we have become a nucleus family. Now we have to address these problems. With the nucleus family coming in, the joint family system, a large joint family, it didn't matter whether you were living under one roof, you used to have the bedas, as we used to call them, all over. You still were scared of each other. I remember one of my friends, Lala Chabil Das, who was one of the most eminent lawyers from Himachal, he was much older to me, and he told me once, I'm talking about pure fear, he told me once, he says, Rakeshwar Lal, my father and your father were colleagues. I would smoke I'm talking about smoking, cigarette. I would smoke in the district courts where we were practicing, even if I knew my father was around. But if I came to know that your father is somewhere, I won't smoke. Why? Because he was an unknown danger. His father he knew.
I mean, that was the kind of respect and fear. We have to instill this. Now, coming to this, we identify the problem. I have one or two simple solutions to make. I don't know how many of you, but in our schools at least, the school I went to, fortunately for my time, there was not too much of a population pressure. Simla was a totally different category of town to live in. I went to a prep school where we were only 5 students to a class till class 6. Then I went to a school where only 18 boys passed out. You have to have moral science. It must be a subject right from, I would say now, should be at the age of 5 onwards. You must tell the children, they are old enough to understand what is the drug means. Because once that fear was instilled into us at that moral science class, believe me, my first cigarette I touched when I was 18 years old. Only because of that thing that I was taught by my teachers, that smoking is not good for you. Smoking is bad. If we do not instill that, now with the nucleus families coming in, we are asking for trouble. It should be, I personally feel, from class 5 onwards, even till the university level. In the university level, I suggest you can introduce it through the NCC, the National Service Scheme and all. It should be made mandatory. When I was in college, we had to attend a particular number of parades before we got a license to apply for the roll number, if I may put it that way. Something of this sort has to be instilled. We must have moral science. What is happening is all of us who practice law and who enforce the law, remember one thing, बचपन में भी जब हम खेलते थे तो चोर सिपाही खेलते थे, चोर आगे और सिपाही पीछे. तो चोर जो है वो हमेशा आगे रहेगा आपसे, आप जो मर्जी कर लीजिएगा. Law also says that. We enact a particular law today, जो हमने पिछले 10 साल में देखा क्या डिफिकल्टी है, और जब तक हमारी लेजिस्लेचर उसको इनेक्ट करती है तो वो उसकी डिमांड जो है वो फिर पीछे हो जाती है और चोर आपसे फिर 10 कदम आगे है. Therefore, enforcement of law is a big challenge. You can make laws, but enforcing laws is only the wearer who knows where the shoe pinches. We as a society have to decide to help the enforcer. Yes, there is no doubt that the NDPS Act is a very, very strict act. Enforcement thereof is lacking, as they say. Yes, it is lacking. We must recognize. We are a country which is not very highly educated, especially when it comes to our enforcement agencies. They don't have all that expertise and the scientific knowledge and all. And then we are lawyers here who, we are masters of all trades, and I mean jacks of all trades, masters of all also, not none, because we can tear to shreds. And nuclear scientist expert, 4 किताबें पढ़ के उसके 4 सवाल पूछेंगे और साहब वो गलत जवाब देंगे और हम कहेंगे हम जीत गए. The thing is that we must have a moral approach to it. All this talk will come to no use until unless my child today learns that drug taking is bad. Another thing which I would strongly recommend, I have never taken any other, let's say, substance which gives you a high other than cigarettes, which I smoked for 14 years. I smoked from 1964 to 31st of March 78. I gave up when I found it was bad. It was just a clean cut. You have to have that will, you must do it. And I would recommend this to all smokers. Other thing I've taken is alcohol. And my friends who know, I take it in measured quantities. I behave like a gentleman. It is not that the alcohol should take control of me. But I've never taken anything, even charas or anything else, not tobacco also, in the sense I've not chewed it. I remember once, there was a client of mine who was very happy with me. He came from Kyog and he'd married 2 girls at the same time, 2 sisters. So there was a case of divorce and I asked him, "Kaun si rakhni hai?" He said, "Ji, choti wali." So I said, "Acha, choti wali." Somehow we managed, we won't go into the details, and his second marriage, I mean simultaneous marriage, he was able to keep the second one. So he was very happy with me. And he said, "मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ." I said, "क्या लाए आप?" तो सेशन जज की कोर्ट से वो बाहर निकल के हमें उन्होंने इतना बड़ा टेनिस बॉल से छोटा एक काला सा गोला हमारे हाथ में पकड़ाया.
मैं कहा ये क्या है? तो आई नेवर सीन, दो आई एम फ्रॉम हिमाचल. कहता जी मेरे अपने हाथ की बनी हुई ये चरस का गोला है और साहब पूछो मत क्या मजा आएगा. तो हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी एज अ लॉयर आई वॉज अपॉल्ड. दैट वॉज द मॉरल टीचिंग ऑफ द फैमिली एंड ऑल. नाउ टुडे आवर चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू ड्रग्स without any fear. We are lacking. We are lacking. The law is not lacking. The law is there. But I would strongly recommend, now we come to the stage where cultivation of cannabis, I think, should be permitted. We have to choose. Some people say it's a lesser evil. No, I think probably it may not be as bad as alcohol. I think probably if cannabis is freely available as it was available in our times, you will have lesser drug addicts. And I don't believe in that concept which the student said that it's a ladder. No, I don't have to climb the ladder in case I'm getting my high, where I didn't climb a ladder from alcohol. I see no other reason why somebody else should. So this is all. I think it's a long topic, and since I have not been paid, I'll close now. Thank you very much. Sir, I thought you'd agreed to do this for us pro bono. I didn't know there was fees to be paid. We'll talk about it after this. But thank you so much for sharing your views, sir. I take it upon myself that once you move out of this room, whatever is said here is not forgotten. So that will be my responsibility, sir. Thank you very much for starting the discussions. I hope I'm not made to call out names. I would request the youngsters to please take the mic and start. Otherwise, the few names I know will get called. That will not be nice. The youngsters here, please. Yes? Idhar teacher? Good evening, everyone. So, considering and being Please a young lawyer, identify yourself so that... my name is Sathar Mehta. I am a practicing lawyer there in the SP High Court. Thank you. And it's been 3 years that I'm in the practice as of now. And not dealt with a major NDPS case as of now, but I've been regularly dealing with the bail cases. So there was a theory that I came across with, right, while researching about the NDPS and per se its effects. In Portugal, there was a very famous thing that went on. That was the opioid substitution therapy. Now, opioid, meaning that it's a pain relaxation tabloid that has been formulated over there. So it's a substitution that has come up over there in Portugal and has acted really very well while dealing with the highly addictive nature of drugs, such as the synthetic drugs. So perhaps something like that could be also be taken up and could be recommended to the state legislature and perhaps the center then. Perhaps it could also be included in the NDPS Act and prospectively into that. Post that, as a young lawyer, what I've really felt is that while dealing with a lot of the bail cases and perhaps the trials in toto, what really occurs is, like, I would put it in an example, right? Now, if the recovery has been made from the entire car, for example, a taxi that was taken up, that was hired in a due procedure, and the contraband was recovered from the back of the taxi itself. So all the people now, all the people are made the accused, of course. Now I would say the problem that we are facing over here is that proving it with the rigors of Section 37 of the Act, in order to put in a bail application of the person who's driving this taxi, who is a taxi driver in every case, right? So the rigors of the Section 37 would also be attracted in him. Yes. Now the Act is also silent perhaps while saying to the words of the reasonable grounds. So if it would be possible for the state legislature or the central to look into the fact that what the reasonable grounds actually means. Now, going by plethora of judgments, reasonable grounds would only mean more than prima facie grounds. But what are those prima facie grounds? So bail application or perhaps the trials, it all goes on to into the conclusive nature that it is the discretion of the court. There's no interpretation of it. I mean, the Act is silent. Reasonable grounds under Section 37 would be one such thing. And there are a lot of other things, but that's all as of now. Thank you so much. Thank you so much. So we have two very valuable suggestions. One is opioid substitution.
The last consultation that we had, where we had psychiatrists also, the general consensus was that maybe we need to, and which we have done, we need to take up with the health department not to prescribe things like things like certain tablets which in itself are addictive. Tramadol, for example, is one which is supposed to be a painkiller. It is the first thing that you give to a patient when they arrive in the hospitals or rehabs. But then we all know that that itself becomes the drug that is taken after a while, though it's supposed to be given on a fixed schedule, but people start taking it weekly, and then it comes down to every alternate day or maybe daily basis. So that, of course, would have to be looked into. What are the green substitutes or the substitutes which are not addictive? And then, yes, we missed out on this, and that is why I say it's always a very happy situation to be listening to so many minds defining reasonable grounds. Yes, we do. If I were to do a case, I would take the whole taxi, including the vehicle and everybody in the vehicle. That is my majburi, I would say. It's a problem that we have, but very thankful to you that you brought this up. We will take this up also, and I'm sure the Law Department is also taking notes. Secretary Law would also be with us in our discussions later. So could I request the Law Department to now react, or should I request the prosecutors, Mr. Mohinder Chauhan and his team, to first give their comments? Which way would you want to go about it? Chauhan sir, your team members, or would you be... Yes, please, please. Please. आप यहाँ आना चाहें, you're most welcome. वहाँ से बोलना चाहें तब भी. वर्दी डीजीपी सर, वर्दी चिराग सर, वर्दी अरविंद मल्होत्रा सर, and वर्दी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, and वर्दी मैडम ADGP CID. I am thankful that I have been called to give my words for this menace. Jai Hind to all of you. So we are all are here because मैं time ले सकता हूँ ना थोड़ा 5-10 मिनट. We all are here because of the lawmakers and law members of this house are very sensitive towards the menace of drug and right of victims. After 1971, our enemy knew that he cannot defeat us in conventional war. So they started a symmetric war. Operation Topaz and narco-terrorism are part of a symmetric war. Narco-terrorism is such war in which enemy uses our own people to weaken us. He knows it is difficult to act on own people. When it comes to act on own people, we start finding loopholes in the law. Therefore, I am here to discuss on the provisions of bail in small quantity under the NDPS Act. In today's time, it is the only grey area in NDPS Act 1985 which requires deliberation. अभी मेरे से पहले जो है SP जो नारकोटिक्स सेल के हेड थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि बेल जो हैं वो डाटा भी दिखाया गया कि कुछ बेलें पुलिस द्वारा भी ली गई. नाउ दैट इज़ द ओनली ग्रे एरिया. अब शुरुआत, एपिक्स एंड लॉ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. मोर वी गेट एनक्रॉस्ड, शाइनर वी कम आउट. और मुझे बिहारी जी का एक दोहा याद आता है इसमें. या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजले हुए. मनुष्य की, इसका अर्थात मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति का कोई भी नहीं समझ सकता. जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे ही वह अधिक उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जाता है. यानी जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह अपने समस्त दुर्गुणों से दूर होता जाता है. सेम गोज विद द लॉ. द फ्रेमर्स ऑफ द लॉ हैव ड्राफ्टेड द लॉ विद देयर ओन इंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन. However, different jurists and eminent
eminent lawyers have different interpretation versions of the shame law. So the more we go through the judgments and interpretation pertaining to the law, more clarity comes pertaining to that law. Bail is the prima facie issue through which message go how stringent is the law resonates in the society. If accused is immediately released on the bail, then it gives hopes to the accused and gives negative message in the society. As per section 36A of NDPS Act, offences are triable by special courts. This section divides trial of two categories. All offences under this act which are punishable with imprisonment for more than 3 years are triable by special courts. This means offences which are punishable which are less than 3 years are triable by a judicial magistrate first class. As section 37 makes all offences of the NDPS Act cognizable and non-bailable. Here is the issue. This means that in any case of small quantity of drugs are involved, they are also cognizable and non-bailable. I would like to bring to the kind notice of this august gathering the very object and reasons of Amendment Act 2 of 1989, which reads as under. Sir, 1989 में काफ़ी amendments दिए गए थे, जिसमें जो है लगभग 7 proposals थी, जिसमें 7th was to provide that the offences shall be cognizable and non-bailable. 1989 से पहले section 37 में the word was only cognizable, non-bailable word was not used. और legislature ने जब इसको propose किया हुआ है तो इसमें लिखा गया है words जो है even though the major offences are non-bailable by virtue of the level of punishments, the technical grounds drug offenders are being released on bail in the light of certain difficulties faced in the enforcement of the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985, the need to amend the law to further strengthen it was felt. अब इसमें जो strengthen करने की बात की गई थी, तो इसमें जो sentence awarding act shall be suspension नहीं हो सकती है, pre-trial disposal of drugs section 52 of NDPS Act, to provide death penalty in subsequent offences, to provide forfeiture of property, and lastly to provide that the offences shall be cognizable and non-bailable. Now, we all are here to implement the law in the spirit of the legislature. We cannot interpret the law against the spirit of the legislature. Thus, with the amendment of Amendment Act of 2 of 1989, the shape of section 37 came in the present form, which makes offences cognizable and non-bailable. This amendment settled once for all that under this act there cannot be two regulations for the provision of bail. That keeping in view the quantum of punishment, offences cannot be held to be bailable as part 2 of first schedule of the CRPC, because सेक्शन 3 से नीचे CRPC के शेड्यूल के हिसाब से क्या हो जाता है कि 3 साल से नीचे नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल. तो हम जो है CRPC के एक आधे हिस्से को कि NDPS एक्ट 37 में कॉग्निजेबल बोल रहा है, लेकिन जो है 3 साल से नीचे CRPC बोल रही है कि वो बेलेबल है. हम दो में से एक चीज नहीं एक्सेप्ट करते. वी हैव टू एक्सेप्ट इट इन होल. तो सेक्शन 37 NDPS एक्ट क्लियरली लेजिस्लेचर इंटेंशन इज टू मेक इट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. नाउ इसकी समस्या हमारी स्टेट में, बाकी स्टीफन मुलर की केस थी महाराष्ट्र की सर, फिर मेनली आई मिनी कादम अली खान वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली. इसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे जजमेंट इन रैम करके जो है दिल्ली में